Bismillahirrahmanirrahim. Let us first have a look at this question. A wire has length 12 centimeter and contains total free electrons. It is number of electrons. We represent it by capital N. When a potential difference is applied across the end, the free electrons move with an average drift velocity speed. This. What is the current? Okay, beta ji, we are to find N. Then how will we find N then? हमारे पास करंट का फॉर्मूला सॉरी आई इज इक्वल टू स्मॉल एन ए बी ई नेव राइट अच्छा ये जो वी आर गिवन द लेंथ फॉर्मूले में एरिया आ रहा हुआ स्पीड इज गिवन ई की वी शुड नो फिक्स्ड है कांस्टेंट है राइट तो वी आर नॉट गिवन एनी वैल्यू ऑफ द एरिया बट ये स्मॉल है और यहाँ कैपिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है तो बेटा ये जो स्मॉल एन होता है ये होता है नंबर ऑफ फ्री चार्जेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर वॉल्यूम तो क्योंकि वायर एक सिलेंडर होती है सिलेंड्रिकल शेप होती है तो सिलेंड्रिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय द लेंथ राइट तो यानी ये हमने फॉर्मूला डिराइव भी किया था ना लास्ट टाइम कि स्मॉल एन जो सा होता है वो या कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू ए एल तो इसी तरह स्मॉल एन की जगह रख सकते हैं ए एल मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा सो बेटा स्मॉल एन को वी कैन डिराइव मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर सो स्मॉल एन कैन बी रिटन टू बी एन और अगर सिलेंड्रिकल शेप में है तो वॉल्यूम ऑफ द वायर विल बी क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ तो बेटा ये वाली वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते स्मॉल एन की जगह एन कैपिटल एन ओवर ए एन अच्छा एरिया एरिया से कैंसिल हो जाएगा नाउ पुटिंग द वैल्यूज एन की वैल्यू ये है लेंथ को आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना 100 से डिवाइड करके उसको ठीक है दिस इज वी और ई की वैल्यू is fixed, which you should keep it in mind like this, right? 1.6 10 is more minus 19, you will get your answer. Clear, beta ji? Now, let us move to the next point. So, sources of current. Beta, what are the sources of current? What are the devices which provide you the current or electricity? So, beta, sources of current are the cell or batteries, generator, solar panels, solar cell, thermocouples. These are the sources of current in our daily life. How do you know they are sources of current? Because they provide you electrical energy. But we know that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be changed from one form to another. Means if they are providing you electric energy, the energy can not be created. It means it is only changed from some other form. So cell and battery have chemical energy. They convert chemical energy into electric energy. Generator have mechanical energy, which is what do you mean by mechanical energy? Kinetic energy plus potential energy into electrical energy. The chemical energy means sum of kinetic and potential energy. And solar panels, they convert light energy into electric energy. And thermocouple, thermo comes from thermal means they convert heat into electrical energy. These are the sources of current. It means all the sources of current convert any other form of energy into electric energy. So any non-electrical form of energy is converted into electrical energy. Right, beta? Clear? These are sources of current. Now, we are going to discuss a concept जो मुझे लगता है कई दफा ओ लेवल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन दे वर नॉट वेरी
clear about or explaining, able to explain the difference between EMF and potential difference. So this is our actually main topic. But before we discuss that, there is another point which the student do have in mind. वो है conventional current. So whenever it is asked what is the direction of current, we say it is from positive to negative. So the electrons cannot move to the negative terminal. That is the flow of positive charge. But whenever we are talking about current, we talk about the flow of electrons. So what the scenario is? Look, beta ji, the bulb was invented, the filament lamp was invented by Edison in 1879, right? And the electrons were discovered way after that in 1897. Means before that, they were no, we were not knowing the electrons, you can say, practically. Theoretically, maybe, but the electron were not discovered. So the Edison have tried, is famous कि इसने filament lamp बनाने के लिए it has done thousands of experiments. He failed thousands of times before being successful to make one filament lamp. So thousands of times, every time he would have used some source of electricity to give it current to the lamp. It means sources of current, battery, generator, etc., maybe motors, or बहुत सी appliances they would have been invented. They were, but the scientists at that time were not knowing the electron. Electron was not discovered. What they used to think about current, what they used to think about, that is called conventional. Convention means the thing which is coming from very old times. रस्तम जिसे कहते हैं. So they used to think current is a flow of positive charge, and positive charge will start from positive terminal and will move towards the negative terminal, right? They had some rules, but later on, when electrons were discovered, it was discovered as well that metals may, in fact, the current is electronic current. Electrons are negative, they will start from, come from the negative terminal and will move towards the positive, बिल्कुल opposite. So then scientists ना, they had, you can say, clashes. कि जो हमने पहले definition ये पढ़ी है वो they were totally wrong. लेकिन उनकी machines बिल्कुल सही काम कर रही थी. और अमेजिंगली इलेक्ट्रॉन रूल्स वही फॉलो कर रहा था जो उन्होंने बनाया था, बस डिफरेंस इन डायरेक्शन. डिफरेंस वाज ओनली इन डायरेक्शन. रूल्स वो वही कर रहा था. अब ये आपस में क्लैशेस स्टार्ट हो गए. उनके रूल्स बिल्कुल सही अप्लाई हो रहे थे पुराने साइंटिस्ट के, बल्कि उनको यहां से भी एक फेवर मिली कि सोल्यूशन और सेमी कंडक्टर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बोथ फ्लो टू क्रिएट करंट. तो दे केम टू नो कि करंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. अब हम डेफिनेशन क्या करें, अब आपस में क्लैश हो गया इनका. तो दे डिसाइडेड, व्हाट दे डिसाइडेड कि क्या से वो डिसाइड किया है कि एग्जांपल समझा रहा हूं. कंसीडर करें दिस इज द सिंबल फॉर करंट. ये इलेक्ट्रिसिटी की सिंबल्स है, हमने ओ लेवल में पढ़ी हुई है. हैव अ लुक एट दिस. ये कॉमन सी है, वी शुड बी नोइंग दिस. galvanometer, ammeter, voltmeter, lamp, bulb, cell, more cell make a battery, switches, resistor, variable resistor. These will keep coming with the time as well. So here is a cell. एक बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल होती है, छोटी नेगेटिव. लेट्स से एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पे देयर इज पॉजिटिव 10 कूलम चार्ज.
और नेगेटिव टर्मिनल पे देयर इज नेगेटिव 10 कूलम चार्ज. These are only for example, not real numbers. Important is जितना पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल पर होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल पर होता है. ये नहीं होता एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इज स्ट्रोंगर देन नेगेटिव टर्मिनल. नो, जब भी स्ट्रोंगर होंगे दोनों टर्मिनल्स होंगे, वीकर होंगे दोनों, इक्वल चार्ज होता है. अच्छा, अब नाउ वी नो कि इस वायर में मेटल में से बल्ब से होता है इलेक्ट्रॉन पास होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? नेगेटिव टर्मिनल से ना. तो लेट्स सपोज कि नेगेटिव टर्मिनल से -2 चार्ज लीव करता है. तो अब आप मुझे बताएं, इफ द नेगेटिव चार्ज विल बी लीविंग फ्रॉम -10, तो व्हाट विल बी लेफ्ट हियर? -8 ना. अब वो -2 जाएगा. पहली बात है -2 क्यों मूव करेगा? व्हाई इट शुड मूव? बिकॉज there is no direct connection between negative positive. The positive side is here, so the negative charge will be attracted by this positive terminal, right? The negative move to the positive terminal. Okay, so let's see, the negative 2 charge will move, and we have discussed the number of charges or electron entering is equal to number of electrons leaving, right? So the -2 will be reaching from here to here to here and then reaches to this terminal. Right, beta ji? Okay. So when this -2 will reach the positive 10 coulomb, क्या होगा? माइनस प्लस 10 में या -2 ऐड कर दो, the result will be +8, right? तो आप नोट करो, जितना यहां 10 से -10 से -8 हो गया, द सेम इफेक्ट यहां नहीं, वही वो भी यही होगा, उतना ही इफेक्ट यहां हो रहा है. यानी 10 से 8 नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, +10 से +8 हो गया, सेम इफेक्ट है. अच्छा, अब ना वी स्टिल कैन नॉट सी कि इस वायर में क्या चीज मूव हो रही है, हमें नजर नहीं आता. थ्रू एक्सपेरिमेंट्स वी नो के वो इलेक्ट्रॉन्स है. अब जब पुराने साइंटिस्ट ने दे हैडंट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट दे ऑब्जर्व कि यहाँ +10 था, अब वो +8 रह गया. देखो, आपके वॉलेट में 10,000 थे और वो फिर आप दोबारा काउंट करते हो, वो 8,000 रह जाते हैं, तो आप यही सोचते हो कि यहां से 2,000 चले गए, राइट? तो दे थॉट यहां से +2 चला गया. अगर आप मैथमेटिकली देखो, +10 में से आप +2 को जाने का मतलब सबट्रैक्ट कर दें, द रिजल्ट इज +8 कूलम, राइट? लेकिन रियल में -2 आया था. तो अगर आप +10 में आने का मतलब ऐड कर दें -2, isn't the result same for both? Similarly, when they thought a +2 charge has gone, where would it go? Towards the negative terminal. Look, ये +2 जब इस -10 में ऐड होगा, will the result not be the same? कि -10 में अगर +2 हम ऐड कर दें, the result will still be same. Because the terminal ना, we can only check the terminals. जैसे still बैटरी अभी भी आपकी चार्ज है कि नहीं है, आप उसके टर्मिनल्स को ज्वाइन करते हो तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है. द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पार्क कैन टेल द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्जिंग, क्योंकि चार्जिंग ज्यादा है या कम है, हमें तो टर्मिनल्स पे पता चलता है. तो दे सेड कि भाई वो पॉजिटिव गया, रियल में -2 आया, लेकिन व्हेन दे सेड कि पॉजिटिव हैज गॉन, द रिजल्ट इज सेम. And when this, in fact, on the negative terminal, actual में minus charge electrons have gone, but they said कि positive charge आया है. लेकिन आप ऐड करें ना जरा, -10 में +2, the result is same.
एज -10 में से -2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो बेटा द डिफरेंस इज व्हेन वी से द पॉजिटिव चार्ज इज गोन एक्चुअली द नेगेटिव हैज कम एंड व्हेन इट इज सेड द पॉजिटिव चार्ज हैज कम एक्चुअली द नेगेटिव हैज गone but saying both mathematically is same. Only difference is direction. And as current is a scalar quantity as we have discussed, current is a scalar quantity. So no already no effect of direction is involved. So the only difference between in this situation was the direction. When we say the positive charge is going, actually the negative has come. The difference is in direction. When we say the positive charge has arrived, actually the negative has gone. Mathematically same. It's just like when we say no, the cooling is coming. Please, we in when we are with family, we say, "Mother, please close the door." खिड़की दरवाजा बंद करी कूलिंग आ रही है. Tell me, but we never say in physics कि cooling is coming. When we are feeling cold, actually we are losing heat. Nothing is coming. So, beta, when we say positive charge is going, actually the negative is coming. When we say the positive charge is coming, negative is going. You can say either way. If you say the negative charge is going, it means positive charge is coming. The result is same. You can see subtracting negative charge or adding positive charge give you same result. Similarly, subtracting positive charge and adding negative charge will give you same result. The difference is only in direction. When you say the positive is going, negative is coming. So beta, as current is scalar quantity, so direction doesn't make any difference. You can say either way. So rather than changing definition, कि positive के लिए अलग रखें, negative के लिए अलग, they decided to keep the definition same. Means from now on, whenever we say simple current, beta, that will be conventional current, which will be the flow of positive charge. Right? Clear? And its direction will be from positive terminal to the negative term. Is it clear, beta? Yes, sir. Okay, give me a minute. Azan ho rahi. Meanwhile, you can draw if you wish. Okay, beta. Ji. Let us now discuss, Alhamdulillah, EMF and potential difference. Beta, we have discussed in a circuit, the current is not used. Actually, the energy is used. And the energy in a circuit is said to be voltage. Beta, like the voltage
there are two type of voltage. One voltage which are provided by the source, the energy which is provided by the source, that is said to be EMF, electromotive force. But the voltage, like the battery, gives us voltage. But if it is written, like for example, if it is written on a battery of 12 volt is written, it means it will provide you 12 volt. But if it is written 6 volt on a bulb, for example, will the bulb provide you 6 volt? No. Bulb will consume the 6 volt. Means, theta, the voltage which are provided by a source are said to be EMF, electromotive force, EMF. And potential difference are the voltage which are not provided, rather they are consumed. They are the voltage which are gone in the circuit. They are said to be potential difference. Like beta, both are voltage, but one voltage which is being supplied by the source, that is EMF. And the voltage which is being wasted or consumed by the appliance or conductor, that is potential difference. Both are voltage, but one is being provided, the other is being, it is going away, consumed. Like beta, the amount, currency, the currency which is coming to our house, which is earned by the parents, is said to be income. But from the same currency, when it is going giving to the मिल्कमैन, दूध वाले को दे रहे हैं तो वो दूध का बिल हो जाता है, ग्रोसरी दे रहे हैं ग्रोसरी का बिल, ट्यूशन या एकेडमी या स्कूल दे रहे हैं तो वो फी हो जाती है, बच्चे को देते हैं पेरेंट्स तो वो पॉकेट मनी हो जाती है। लाइक जब आ रही है तो उसे इनकम, सैलरी, प्रॉफिट कह रही हो, जब जा रही है तो उसका नाम चेंज कर रही हो, है तो वही पैसे। तो जो वोल्टेज जो किसी सर्किट में कोई सोर्स हमें प्रोवाइड करे उसे ईएमएफ, और जो कोई अप्लायंस कंज्यूम करिए उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कहते हैं? बेटा, वर्ड पोटेंशियल कम्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, राइट? फिजिक्स में हम पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ते हैं सबसे पहले। पोटेंशियल इज एनर्जी। व्हाई वी आर, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? एनर्जी ही है ना। Why we call it potential difference? Actually, we have discussed कि किसी भी सर्किट में करंट यूज नहीं होता, यानी जितना करंट या चार्ज एंटर होता है उतना लीव करता है, तो फिर यूज क्या होता है? जैसे आप कोई फैमिली मेंबर है, वो अगर फैमिली मेंबर सब मिलकर आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हो, तो क्या वापसी पे फैमिली मेंबर कम हो जाते हैं? नहीं। द फैमिली मेंबर्स एंटरिंग इज इक्वल टू फैमिली मेंबर्स लीविंग। ठीक कम होता है अमाउंट। अमाउंट इज एनर्जी, राइट? कि लाइक फादर है या पेरेंट्स में से जो, या जो शख्स जिसने पार्टी देनी है उसके पास अमाउंट ज्यादा होती है व्हेन एंटरिंग, जब लीव करते हैं तो उसके वॉलेट या अकाउंट में अमाउंट लो हो जाती है। वो जो डिफरेंस आता है ना, वो यहाँ रेस्टोरेंट से, टेक इट एज रेस्टोरेंट, कंज्यूम हुआ। इट मींस किसी भी अप्लायंस में जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस एंटर होते हैं तो उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, जब वो लीव करते हैं तो एनर्जी लो हो गई होती है। तो जो उनकी एनर्जी में डिफरेंस आता है, मींस वो एनर्जी यहाँ कंज्यूम हुई है। दैट डिफरेंस इन एनर्जी इज सेड टू बी, जो कंज्यूम हो गई है, पोटेंशियल डिफरेंस। राइट बेटा जी? क्लियर? सो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एनर्जी इन अ सर्किट इज सेड टू बी वोल्टेज। तो वोल्टेज और एनर्जी, if this voltage is being provided by a source, then provided voltage are said to be electromotive force, right? And the voltage which are consumed by an appliance or conductor, they are not being provided to you, because rather they are being used up. They are said to be potential difference. Acha, what a source does? Source converts a non-electric energy into electric energy.
But appliance does the opposite. You apply the you provide the appliance with electric energy, and it converts into some other form of energy. Like you provide electric energy to bulb, it converts into light plus heat with all. Heat is always there in all electric appliances. And you provide electric energy with fan, it converts into kinetic or mechanical energy. You provide electric energy to the heater, provide changes into heat or thermal energy. You provide electric energy to TV, television, or mobile. It is converted into light and sound. So the appliance does the opposite, right? The income and expenses are opposite. Like कोई पेरेंट है, वो कोई बिजनेस है, वो कोई मोबाइल, कोई प्लॉट, कोई कोई भी खिलौना या कोई चीज बेचते हैं, तो दे ब्रिंग अमाउंट और मनी, पैसे लेकर आते हैं चीज बेचकर। लेकिन जो बच्चे में घर में बच्चे होते हैं, डोंट दे डू द ऑपोजिट? वो किसी को पैसे देकर अपनी कोई चीज लेते हैं। तो ऑपोजिट, like parents, EMF, potential differences, kids, right? Okay, the next, EMF source. What the source is doing in actual. बेटा, लाइक ना जब हम कहते हैं ना एक पूरे सर्किट को बैटरी चला रही है, या एक बड़ी बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है, तो एक बड़ा जनरेटर है जो पूरे सर्किट को, पूरे बिल्डिंग को चला रहा है, स्कूल को चला रहा है, बैंक को चला रहा है। तो हाउ, क्या वो जनरेटर खुद जाकर हर अप्लायंस के पास जाता है? नहीं। फिर हाउ डज इट वर्क? तो लाइक जैसे हम कहते हैं ना, गॉड फॉरबिड, अल्लाह पनाह में रखे, कि जैसे गन से किसी को मारा है, तो क्या गन जाकर हिट करती? नो। गन प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे गन बुलेट को एनर्जी देती है, सॉरी, बुलेट जाके आगे टारगेट को हिट करती है। इसी तरह ही बेटा, जो सोर्स है वो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, राइट? खुद नहीं जाता, तो वो इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाली फोर्स, राइट? तो सोर्स जैसे बुलेट, गन बुलेट को एनर्जी देती है और बुलेट आगे जाकर टारगेट को हिट करता है, ऐसे ही सोर्स इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। जो सोर्स इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, चार्ज को एनर्जी देता है, दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और चार्ज, बुलेट आगे जाकर जो गन को, टारगेट को हिट करती है, उसको एनर्जी देती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस। यानी चार्ज आगे जाकर अप्लायंस को एनर्जी देगा। व्हाट इज द एविडेंस कि चार्ज gives the energy? Because when charging are entering, they are having higher energy. When they are leaving, they are having lower energy. The difference in energy is potential difference. And who is providing energy? Charge is providing energy to the appliance. Source provides energy to the charge, and charge gives the energy to the appliance. So, beta, this is the difference. The energy given by the source to the electron to motivate the electron or charges, that is EMF. And potential difference is the energy of the charge which is consumed by the appliance. This is the difference, right? Formally, we are doing now the definition. Let me again tell you. This is the source. The energy provided by the source is EMF. The voltage or energy provided by the source is called EMF, whereas energy or voltage consumed by the appliance is potential difference. So how do you define the EMF? EMF is the work done in moving a unit charge throughout the circuit. EMF has a symbol of capital E. Beta, work done, unit means dividing the by charge. So EMF has formula work divided by charge. Again, this work done, EMF is work done to move the charge. And the unit of EMF is voltage. Now, on the other hand,
Potential difference is work done by a unit charge. So beta, look at the difference. Here it is the work done in moving a unit charge. This is the work done by a unit charge. Right, beta? Here the source is doing work in moving the charge, giving energy to the charge. Here the work is done by the charge. Opposite. Will you remember? Right, beta ji? So again, work unit means dividing and charge divided by both are work divided by charge. This is again potential difference has a symbol of capital V. It is also work divided by charge, but nature of work is opposite. In EMF, work is done to move the charge. In potential difference, work is done by the charge to run the appliance. Right? As both are same, like both are currencies, whether it is income, that is also amount or currency, the expenses are also paid in currency, but one is coming, the other is going. So beta, similarly, the one is coming from the source is that work is EMF, and the work which is going away, the energy which is going away by the appliance, taken away by the appliance, is said to be potential difference. Both are same, so the nature is opposite. Both are volt, both have same unit, both have voltage, but one voltage which are coming to the circuit are EMF, and voltage which are consumed by the circuit, by the appliance or conductor, are said to be potential difference. Both have the same unit, only the nature is different. जैसे पैसे हैं वो आ रहे हैं वही तो वो इनकम है या सैलरी है, जा रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस हो जाते हैं, वही पैसे हैं. तो वोल्टेज विच आर कमिंग एंटरिंग द सर्किट बाय द सोर्स फ्रॉम द सोर्स ईएमएफ, जो जा रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस. यूनिट इज सेम, फॉर्मूला इज सेम, नेचर इज ऑपोजिट. बेटा इफ इट इज आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, सो वोल्टेज की यूनिट, potential difference की voltage, work की joule, charge की coulomb. So you can say 1 volt is 1 joule per coulomb. So it is very important. Both of our exam में आया हुआ है. Okay, what do you mean by 1 volt? It is 1 joule per coulomb. Sometime वो इस तरह भी दे सकता है 12 joule per coulomb will mean 12 joule. अच्छा इसको सेंटेंस में मतलब क्या होता है? 1 volt means 1 joule energy is required to move 1 coulomb charge across a conductor or appliance. And 12 volt का मतलब 12 volt joule energy will be required to move 1 coulomb charge across a conductor or appliance. Right, beta? 1 volt is 1 joule per coulomb. 12 volt is 12 joule per coulomb. Clear? Right? Is it clear? Any question, beta? Fine.